Send your answer on my WhatsApp. And you guys, so it is just released, I think. Chapter 11th, English is on 27th. Before that, I don't think anything is there. Education. Also, like, raise your hand if you don't know how to do this question. You're completely like taken apart. Like, what is the approach? You don't know anything. Just raise your hand, then I can explain it. Okay, Tariq, you are completely. First of all, try to look into this molar heat capacity. Then you will understand maybe. Tariq, can you tell me what is the formula for molar heat capacity? Sir, given mole by number of mole of element. Molar heat capacity. Please read from your notes. I'm not asking about the number of moles. I'm asking what is the molar heat capacity? Cm is equal to Cm by N. Cm is equal to C by N. C by N. What is C here? Heat. No. You guys should start revising now. C क्या है यहाँ पे बताइए जरा. What is C here? Heat capacity. Heat capacity. And heat capacity क्या होता है? That is the heat required to increase the temperature by what degree Celsius, right? Yes, sir. ठीक है? अच्छा. Calculate the number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 60 grams of aluminium. ठीक है, तो सबसे पहले the 60 gram is there and they have given you the molar heat capacity. और आपसे पूछा जा रहा है कि whatever heat is required to increase the temperature by 1 degree Celsius, उसका 10 times होगा. First of all, calculate the number of moles of aluminium. First of all, calculate the number of moles of aluminium.
And then also write what is the formula of C. Okay, I think how many of you cannot understand till now? इन लोगों को नहीं आ रहा है, please tell me. Because I have not got any answer from anyone. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T and number of moles will be here. Number of moles आपको क्या निकालना है? हीट निकालना है. So what will be Q? Q will be equal to the number of moles into the delta T into what? The molar heat capacity. Simple formula है. Number of moles निकालिए, delta T दिया हुआ है आपको and molar heat capacity भी दिया हुआ है आपको. Now tell me the answer. First of all, calculate. You have to calculate ये ना, the number of moles. बस ये निकालना, nothing else. Oh, अच्छा. What is the molar mass of aluminium? Tell me guys. किसी को पता है? Molar mass of aluminium. Molar mass of 27. aluminium. 27 grams per mole. ठीक है. Calculate the number of moles. Devangi has sent the answer. Correct है Devangi. Eba has sent. Hiba, I think this is incomplete ना Hiba? अभी आप और भेजिएगा. अच्छा, ठीक है. ये तो हीट निकालना ना, यहाँ पे कैलकुलेट द हीट. हीट तो नहीं आया ना? Calculate the heat. Oh, so I didn't send the picture. Okay.
What about others? Fahad, Jania, Tarif, Abdullah, किसी का आंसर नहीं आया? Numericals. Okay, Heba, looking at your answer now. Units, Heba, units. Unit क्या होगा? Also write the units, है ना? Units मत भूलिएगा. First of all, Yes. number of moles will be equal to given mass grams upon 27 grams per mole. This will be equal to, I think you guys are getting 2.22, right? Moles. Number of moles is 2.22. Delta T, it is equal to 20. Kelvin and degree Celsius में आपके पास difference दोनों same होता है. Okay, please remember that. You have 20 Kelvin and the molar heat capacity is 24. So you just need to multiply these things and you will get the answer in joules, because this is in mole, this is in Kelvin, this is in joules, mole inverse, Kelvin inverse. So Kelvin inverse and Kelvin cancel, mole inverse, mole will cancel. You get the answer just in joules. Okay, हम इसका आंसर किसने भेजा है? Okay, this is Astha. ठीक है. It's fine. जानिया, हाँ अब तो ठीक है सबका. Okay. Let's try one more. I think I don't have any questions. All right, next. Thermochemical equation. Okay, right, next. Thermochemical equation. What is thermochemical equation? A balanced chemical equation. This is a balanced chemical equation, and it has one additional information, that is about the heat change during the reaction. Please think, a balanced chemical equation that gives information about heat change during the reaction.
heat change during the reaction. For example, if I have carbon solid plus O2 gas. Just a second. Okay, carbon plus oxygen gas, it is going to give you carbon dioxide. Okay, and this is a combustion reaction, so obviously it is going to give you energy, and the enthalpy change in this reaction will be equal to minus 395 minus 393 होता है 393.5 yeah 393. 393.5 kilojoule per mole. It says that if you burn 1 mole of carbon, then you are going to get 393.5 kilojoules of energy. Okay, so when you have this information also, this becomes a thermochemical equation. यहाँ तक अगर आपके पास है, then this is a chemical reaction, chemical equation. But if you are getting information about the enthalpy change, that is energy change, then this is known as thermochemical equation. Okay, how you have to see this? You have to see this like this: carbon plus oxygen gas is going to this carbon dioxide gas, और ये जो energy आपको मिल रहा है ना, that is also in the product. So if you want to write this in the product, it will be like this: 393.5 kilojoule per mole. Okay, अब बोलिएगा सर यहाँ पे प्लस साइन क्यों है? Because I am saying right now, this minus sign, इसका क्या मतलब होता है? माइनस साइन आपको बस ये बता रहा है हीट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता. दिस नेगेटिव साइन इज जस्ट टेलिंग यू दैट हीट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम. वो डायरेक्शन के बारे में बोल. इट इज टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन वेयर द हीट इज गोइंग. इट इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. If it was positive, it was coming from the surrounding to the system. Okay, so this negative sign, it just denotes the direction of the, it just denotes the direction of the heat. Okay, the heat is flowing from system to the surrounding. This is thermochemical equation. Now, there is a word that you are going to see many times. I hope you have written this. You are going to see many times in thermodynamics, that is standard enthalpy of. Okay, so what is the meaning of this standard enthalpy of? Please write this down. Meaning of standard enthalpy of. You are going to see many equation like this. ठीक है, तो एक बार हम लोग standard enthalpy समझ लेते हैं, then we are going to easily understand what is the enthalpy of formation, the standard enthalpy of formation. Then we are going to learn the standard enthalpy of fusion, standard enthalpy of reaction, and everything else. Okay, so standard enthalpy का क्या मतलब होता है? Please write. First of all, it is measured at one bar pressure. Okay, it is measured at 1 bar pressure. That means also obviously enthalpy है, that means pressure constant होगा, है ना? Enthalpy है तो क्या होगा? Pressure constant होगा. And if the pressure is constant, what is the pressure? It is 1 bar pressure. The second point is more important. Temperature can be anything. Temperature आपके पास कोई restriction नहीं है, but all the substance should be. But all the substance should be in their standard form at that temperature. Should be in their standard form at that temperature. ठीक है, इसका क्या मतलब है? This is important. For example, if you are talking about water, then and the temperature we are taking as minus 10 degrees Celsius. At minus 10 degrees Celsius, we will take H2O as what? Solid, because obviously minus 10 degree में क्या होगा? ये solid होगा. If we are talking about water at 25 degrees Celsius, then we will take, अगर standard enthalpy measure कर रहे हैं, then we will take at this case water as liquid. And if we are having at, let us suppose 150 degrees Celsius,
then in this case water is going to be gas. Okay, so standard enthalpy में temperature can be anything, but whatever substance you are using, it should be in their standard form. पानी को अगर if you have H2O at -10, it will be in solid, so we are going to take it as solid water. If you are talking at -10 degrees Celsius, if you are calculating any standard enthalpy at 25 degrees Celsius and we have water in this case, then you are going to take it as liquid. Then we are going to take it as liquid and not solid or gas. Okay, so please remember this. This is the meaning of standard enthalpy. Now please write enthalpy of formation. Right, next, enthalpy of formation. Now these definitions are very important. Okay, enthalpy of formation. This is written as delta H F. Hello, Sakina, am I audible? Yes, sir. You are meant to enter this 11th standard class, or you have some other class? No, sir. Actually, Azam sir told us to join for physics. For physics? It must be Yes, some sir. other link, I guess. Sir, do Can you you know please which ask? link? No, I mean, I have joined from Learnivio account, but I don't know actually. I just teach chemistry here, so it would be better if you ask the WhatsApp number of Learnivio. Okay, sir. I'll ask. Okay. Okay, fine. So we have one more Sakina here. Sakina, is that you? Same? No, sir. She's also supposed to join the physics class. Acha, okay, both of yours. Okay, fine. So you can like just leave this class and ask Learnivio WhatsApp number and they will let you know. Okay, what is the correct link? Okay. Enthalpy of formation, delta HF. I've joined with Learnivio's team. I don't know whether it is right or not. Okay. Enthalpy of formation. Now please remember, see, whatever definition we are going to write, enthalpy of formation, enthalpy of fusion, enthalpy of combustion, enthalpy of, let us suppose you have hydration. Okay. All of these terms, enthalpy of, they are going to tell you about the chemical reaction. Okay. If you're talking about enthalpy of formation, they will either tell you about the amount of reactant that you have to take or the amount of product that you have to take. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, मे बी आप लोगों को नहीं पता, मे बी इट डजंट सीम लाइक दैट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. Enthalpy of formation or enthalpy of any other thing, they are going to tell you something about the amount of product or the amount of reactant. Now, what is this enthalpy of formation telling us? Please write the enthalpy, the delta H, the change in enthalpy when 1 mole of a substance, देखिए, when 1 mole of a substance is formed from its elements in their most stable state. ठीक है, अब enthalpy of formation of carbon dioxide जब बोला जाएगा, when we are going to talk about the enthalpy of formation of carbon dioxide, then this definition of enthalpy of formation is restricting us. What it is restricting? Enthalpy of formation can never be for 2 moles of carbon dioxide. It will always be for 1 mole of carbon dioxide. जब भी हम लोग enthalpy of formation की बात करेंगे, we will always talk about 1 mole of carbon dioxide. That means, for example, first thing इन्होंने क्या restrict कर दिया? It told you about the amount of product that you are going to get. So you are going to have only CO2.
यहाँ पे 2 आप कभी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप हाफ कभी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप 4 कभी नहीं लिख सकते. इफ देयर इज 4 आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4. दिस कंप्लीट इक्वेशन. फर्स्ट थिंग इज दैट they said that enthalpy of formation when 1 mole of substance is formed from its element. What are the element of carbon? What are the element of carbon dioxide? Tell me. Carbon dioxide is made up of what elements? Carbon dioxide is made up of what elements? Carbon and Carbon and oxygen. oxygen. Very good. Carbon and oxygen. कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है बताइए जरा. कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है आप लोगों को शायद नहीं पता हो. इट इज कार्बन सॉलिड. हाँ, ग्रेफाइट. कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का क्या होता है? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? What about oxygen? Tell me. Most stable state of oxygen? Gas. Sorry? Gas. Ashes. O2. O2 gas. Is that clear, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. देखिए आप किस तरह से restrict कर दिया आप बताइए यहाँ पे. Now everything is balanced here. You don't need to do anything. Otherwise you have to balance, and then they will give you an information that delta H for this reaction. This is equal to minus 393.5 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. Okay. Now आप लोग बताइए. मान लीजिए आपको बनाना है व्हाट इज द रिएक्शन फॉर. आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखिएगा यहाँ पे. डेल्टा एच छोड़ दीजिए, आप डेल्टा एच छोड़ दीजिए. राइट द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. केमिकल इक्वेशन लिख के बताइए. Enthalpy of formation of ammonia. Fahad, I don't think so. थोड़ा सा मिस्टेक है फहद. थोड़ा सा मिस्टेक है बस. Devangi, looking at your answer. Devangi, there is some mistake. Nitrogen is not balanced. देखिए. नहीं नहीं, हिबा देखिए ना, वही तो हम बोल रहे हैं. उन्होंने क्या बोला? 1 मोल ही होना चाहिए, चाहे आपके पास रिएक्टेंट साइड में फ्रैक्शंस आ जाए. इट डजंट मैटर. दिस शुड बी ऑलवेज 1. जी जी. अच्छा. देवांगी, लुक, योर नाइट्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड. फायदा आपका भी नाइट्रोजन बैलेंस नहीं था. अब सही है फहद, वेरी गुड.
मतलब गलती थी, हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता रहेगा। सही है, आप सही है। देवांगी नहीं हो रहा क्या आपसे? देवांगी, हिबा, Sending, sir. sending. This will be NH3. We need nitrogen and we need hydrogen. Nitrogen in its elemental form, it is N2 plus hydrogen is H2. Nitrogen, how many we have? We have one nitrogen, so we'll do 1 by 2. Hydrogen, how much we have? We have 3, so we are going to do this 3 by 2. Now it is balanced. Do one more. Let us suppose you have HCl, then you will use half H2 plus half Cl2. Let's suppose you have water, then you will use 1 mole of H2 plus half mole of O2. अब सही है, very good. ठीक है, now listen very carefully. If you look at this information here, carbon plus oxygen is giving you carbon dioxide, and this is the enthalpy of this reaction. And this is also what? This is also the enthalpy of formation. Okay, this is also the enthalpy of formation. That means 1 mole of CO2, if it is going to form, it gives minus 393.5 kilojoule per mole of energy, है ना? लेकिन अगर आप गिव्स लिख रहे हैं ना, तो आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट, बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग अस इट इज गिव्स, दैट मींस नेगेटिव साइन है ही. दोनों में नेगेटिव साइन, गिव्स बोल दिया आपने मतलब नेगेटिव साइन. Therefore 2 moles of CO2 would give how much? 2 into 393.5 kilojoule per mole. Yes or no, please tell me guys. Correct है? Yes. ठीक है. Similarly, you can have a question like this. बहुत ही आसान सवाल. Please write question. Calculate the enthalpy of formation from following data. The data is H2 plus Br2 gives you HBr, 2 moles of HBr. And the enthalpy of this reaction is given out to be minus 72.8 kilojoule per mole. ठीक है, enthalpy of reaction क्या दिया हुआ? minus 72.8 kilojoule per mole. Now यहाँ पे देखिए, this is your given reaction. Please see how you are going to approach all of these steps. जितने भी सारे सवाल है ना, आपको एक given reaction, you will be some given reaction and then you will write the target reaction. What are you going to write? Target reaction. Target reaction will be in accordance to this enthalpy of whatever you are given. Enthalpy of formation है, तो इसका according जो आपके पास target reaction होगा, it will be having HBr. You'll have half H2 plus half Br2. Now, in order to achieve this target, ये आपके पास given है, and this is your target. Okay, this is the target equation. इसी का आपको क्या निकालना है? Enthalpy निकालना. Delta H formation ही देगा आपको. Now, how can you go from given to target? Tell me. What do I need to do to this given reaction? इसको क्या करना पड़ेगा बताइए जरा. What do we need to do this? What do we need to do? Divide by 2. है ना, डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 by 2, है ना. तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 2 हो जाएगा, ये भी 1 by 2 हो जाएगा. दिस विल बी आल्सो बाई 2 एंड दिस विल बी आल्सो बाई 2. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी. आसान है ना. अब प्लीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू minus 72.8 kilojoule per mole divided by 2. Okay,
तो देखिए जितने भी आपके पास एंथैल्पी ऑफ है ना, उसका जो डेफिनेशन है एंड द रिस्ट्रिक्शन दैट इट इज गिविंग यू गाइस कि what is should be the amount of product. इस केस में क्या था, फॉर्मेशन में you have to remember the amount of product and also the reactant should be in what in the most stable form, element से बनेगा in the most stable form. Please remember that, है ना. ऐसा नहीं कि आप HBr को किसी और चीज से बना सकते हैं. For enthalpy of formation you have to, for this reaction you have to make it from the elements only, hydrogen and bromine. Now you write next. Standard enthalpy of formation. Delta HF naught. No. Standard enthalpy of formation, first thing, what should be the pressure for standard condition? Tell me. Standard enthalpy के लिए what should be the pressure? Tell me. Delta 1 bar. HF measured at how much? 1 bar. 1 bar. और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर का कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा HF measured at 1 bar, it will be delta HF naught, है ना. Delta HF naught is also known as standard molar enthalpy of formation. Okay, of formation. Now please listen. Delta HF naught of elements in their most stable state is 0. हम आपको बताते हैं क्यों. Why it is 0? Please. Let us suppose I want to calculate the delta HF naught of O2, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है. O2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? How many moles of O2 do you need? 1 mole of O2, ठीक है. Now, what are the elements that make up oxygen gas? Tell me, कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन गैस बनाता है? What element makes oxygen gas? Oxygen only, right? Yes or no? Yes, sir. है ना. और ऑक्सीजन गैस क्या होगा? O2. देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम ना. ऑब्वियसली डेल्टा H जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. अब चाहे वो रिएक्ट आपके फॉर्मेशन हो, स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, दिस delta HF naught will be equal to 0. Why? Because the reactant and the product are equal due to the definition of enthalpy of formation. बात समझ में आ रही है? हमारे पास we are restricted by the definition ना. Please remember that. ऐसा नहीं कि फॉर्म करने में ऑक्सीजन सर फ्री का मिलता है क्या? सर ऑक्सीजन को फ्री का बना सकते हैं, वो बात नहीं है. The difference that we are talking about here is what? It is according to the definition of enthalpy of formation. Due to the definition of enthalpy of formation, the standard enthalpy of formation of elements in their most stable state is always 0. Okay, it is always 0. But if you want to form O2 gas, if you want to form, let us suppose O2 solid, तब ये equal नहीं होगा, तब it is not going to be 0. Please remember that, है ना. तब आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी. Similarly, if you want to form H2O gas, but H2O का most stable state, H2O gas तो नहीं कर सकते. Wait a second. Let us suppose you have nitrogen solid, ठीक है. nitrogen solid कहाँ से? nitrogen gas से. Now this is not in the most stable form, most stable state, that is why it is not going to be 0. ठीक है. तो आपके पास standard enthalpy of O2 gas हो गया, ठीक है, standard enthalpy of O2 gas हो गया, N2 gas हो गया. All of these things are going to be 0. Please write here delta HF 0, delta HF naught
of N2 gas will also be equal to 0. Delta HF naught of carbon solid will also be equal to 0. है ना, bromine gas, chlorine gas, all of these delta HF naught will be equal to 0. Is this clear? Yes or no? Please tell me. This point is very important. ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, इसको प्लीज याद रखिएगा. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Right, next, relationship between standard enthalpy of reaction and standard enthalpy of formation. Now, listen very carefully. Let us suppose we have a reaction in which we are going from A to B. Don't write anything, please listen. We are going from A to B. क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? Can we say that we are doing two things? What we are doing? We are destroying A and we are forming or producing or creating, कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, producing B. ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आप बताइए, when this reaction will be completely over, A तो कुछ बचेगा नहीं. That means A has been destroyed. Yes or no? Are you guys with me? Yes, sir. है ना, A has been destroyed and B has been produced, because initially B was not there, now B is there. So in this reaction, we can say that a different perspective of looking at this reaction will be, we are destroying A and we are producing B. हम लोग A को क्या कर रहे हैं? Destroy कर रहे हैं. अच्छा, destroy करने का मतलब क्या हो गया? Destroy करने का मतलब हो गया opposite of forming. Yes or no? सही है. और opposite of producing बोल सकते हैं. Yes, sir. बाकी लोग का नहीं है, सब निकल रहा है. हिबा, तारीफ, फहद, टेल मी गाइस, अपोजिट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं इसको? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. है ना, ठीक है. नाउ द एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बी विल बी व्हाट? इट विल बी डेल्टा HF नॉट फॉर द प्रोडक्ट, है ना. अपोजिट ऑफ प्रोड्यूसिंग का क्या होगा? डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट में आप माइनस साइन लगा दीजिए. दिस विल बी व्हाट? द अपोजिट ऑफ फॉर्मिंग. यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. सही है. Can I represent the energy required for opposite of producing and producing like this? अब इस पूरे reaction में हो क्या रहा है? We are either we are destroying and we are producing. That means the enthalpy for this complete reaction will be equal to delta H naught R will be equal to the sum of these two enthalpies. कौन से enthalpies? Delta HF naught for the product in positive sign plus the negative delta HF naught of the reactant. ठीक है, आपके पास ये क्या मिल के आ जाएगा? This will be delta HF naught of products minus delta HF naught of reactant. ठीक है. अब मान लीजिए if you have this, अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है या फिर एक ही रिएक्टेंट है तो आप इस तरह लिख सकते हैं. But if you have multiple products, then the delta H naught R, that means enthalpy of reaction will be the sum of all the delta HF naught of the product minus the sum of all the delta HF naught standard enthalpy of formation of the reactant. Is this equation clear to everyone? Yes or no? Please tell me. आप इसको ना बिल्कुल नेचुरली लेके चलिएगा. प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं तो उसका पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्टेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. चलिए, राइट दिस डाउन. सवाल एक भी नहीं छूटेगा, कोई कंसेप्ट आप लोगों का ऐसा अधूरा नहीं रहेगा. ओके,
each and everything in thermodynamics is going to be very logical. आप लोग please धैर्य से बस पढ़ते रहें चीजों को, okay? And trying to be attentive in the class. आप इधर उधर मिस मत कीजिए, है ना? Disturb मत होइए. Try to be attentive in this class. देखिए, like this equation is very important equation, है ना? बहुत आसानी से आपको निकल गया यहाँ पे, but this is very important equation. We are going to do many reactions, many questions from this equation. एक और चीज जो हमने आपको बोली ना, जो ध्यान में रखना है आपको क्या है, एक तो सारे एंथैल्पी ऑफ जो भी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, व्हाटएवर एंथैल्पी वी आर राइटिंग, दे विल डायरेक्ट यू, आपको वो एक डायरेक्शन देंगे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. दूसरी चीज जो हमने बताई जो इंपॉर्टेंट है, आपको गिवन रिएक्शन होगा एंड आपको टारगेट रिएक्शन होगा. इसका कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, गिवन रिएक्शन एंड टारगेट रिएक्शन. एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट द रिलेशनशिप्स slowly. केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे जो लिखेंगे ना हम लोग, दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. कि आप केमिकल इक्वेशन को आप कैसे लिखते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट वहां पे. जैसे फॉर्मेशन ने बोला 1 मोल होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू रीड सम मोर एंथैल्पीज, वहां पे आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल कंबशन अगर हम ले, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो 1 मोल कंबस्ट करना चाहिए, रिएक्टेंट में 1 मोल होना चाहिए. ओके, चलिए इसको लिखिए, देन विल डू सम क्वेश्चंस, तभी आपको समझ में आएगा. All of it done? Write a question. Combustion of 1 mole of benzene gives carbon dioxide and water with 3267 kilojoule of heat at 298 Kelvin. At 298 Kelvin and 1 bar pressure. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene if standard enthalpy of formation of carbon dioxide is equal to minus 393.5 kilojoule per mole and standard enthalpy of formation of water is equal to minus 286 kilojoule per mole, minus 286 kilojoule per mole. ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा, भले ही सवाल आपको आसान लग रहा हो, but please listen here. First of all, you need to write the balanced chemical equation. What do you need to write? Balanced chemical equation. The restriction that the question has provided here, बहुत ही subtle तरीके से it said mole of benzene. Combustion of hot mole of benzene, 1 mole of benzene, है ना? आपके पास बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. ये 1 ही रहेगा हमेशा, ये चेंज नहीं होने वाला है. You are going to get oxygen and this is going to give you some moles of carbon dioxide and some moles of water. And what will be the enthalpy of this reaction? Tell me, guys.
What is the enthalpy of this reaction? सवाल भी दिया है. What is the enthalpy of this reaction? Tell me. बताइए ना. Combustion of इतना gives इतना with 3267 kilojoule of heat at 298 Kelvin, 1 bar of pressure. तो बताइए enthalpy of this reaction क्या दिया हुआ है बोले. Combustion का मतलब होता है reaction with oxygen. I hope you guys know that. Yes or no? Combustion means reaction with oxygen. या ये तो पता है ना आप लोगों को. Yes, sir. है ना. Combustion का मतलब क्या होता है. Reaction with oxygen. Now tell me, what is the enthalpy of this reaction? What is the enthalpy of this reaction? Raise your hand if you find this correct. Raise your hand if you agree. All of you, please raise your hand if you agree with this. If you don't agree, please tell me क्या change होना चाहिए. Heba agrees. All of you agree with this? Tariq agrees. Devangi agrees. Jania, Abdullah, Aisha, what about you guys? Abdullah, are you there? Don't know. Okay. Chaliye. Devangi, Ibar, can you read this statement? The combustion of. पढ़िएगा जरा. The combustion of 1 mole of benzene gives carbon dioxide and water with 3267 kilojoules of heat at 298 Kelvin and 1 bar pressure. Okay. तो क्या क्या दे रहा है. 1 mole of combustion of benzene, it is giving us what things? Yes, Devangi. Carbon dioxide and water. And is there something else which it's giving? 3267 kilojoules of heat. So what should be the sign? Plus or minus? Minus. ठीक है. ध्यान रखेंगे सब लोग, है ना. You saw कितना subtle है ये सारी चीजें. Okay, so please remember क्या क्या देखना है आपको. The amount, whether it is giving us heat or it is taking heat. Okay, and if it is 1 bar, then it is going to be standard. ठीक है. So आप लोग प्लीज इन सब चीजों का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा यहाँ पे अगर आपको डेल्टा H नॉट आ रहा है. ठीक है. Now we are going to now balance this chemical reaction. Now we have 6 carbons, so it will be giving us 6 moles of carbon dioxide. We have 6 water molecules, so it is giving me 3 moles of water because 1 mole of water has 2 hydrogen atoms. Okay, it has 2 hydrogen atoms. Now please see how many moles of oxygen will be there, even though it is not very much required, but still, just to balance this equation, how many oxygens do we have here? We have 6 into 2, 12, 13, 14, 15. So 15 by 2 moles of oxygens will be here, and this chemical reaction is balanced. The only thing that was constant here, which we could not change because of the information given to us, was 1 mole of benzene. ये enthalpy of reaction जो है ना तभी होगा if you have 1 mole of benzene. If you have 2 moles of benzene, then it is going to give you twice that of energy. तो आप इसको change कर ही नहीं सकते. It will be always 1 mole of energy because we have been restricted by the question. Now, let us see what it is asking us. It is asking us the enthalpy of formation of benzene. Now we have just seen the above equation in which you have delta H naught R is equal to the sum of the enthalpy of formation of products minus the sum of the enthalpy of formation of the reactants. Okay, of the reactants. Now please see what do we have in the product. आप लोग ऐसे लिखिएगा. See here. You have carbon dioxide, but how many moles of carbon dioxide? You have 6 moles of carbon dioxide. So 6 into the enthalpy of formation of CO2. Please remember this. ठीक है. आपको कितना मिल रहा है carbon dioxide? आपको 6 moles मिल रहा है ना. So you will write 6 into delta HF naught of CO2 plus. What do we have? Water also. So how many moles of water are we getting? 3. So this will be 3 into delta HF naught of water minus this is delta H naught R minus what are we having in the reactant? 1 mole of benzene. So delta HF naught of benzene C6H6 plus माइनस ब्रैकेट में ना हम इनसाइड यहाँ पे हम अंदर में प्लस ले सकते हैं. दिस विल बी डेल्टा HF नॉट ऑफ ऑक्सीजन.
of how many moles of oxygen? 15/2 ना, तो उसको भी लिखना जरूरी है. लिखिए 15/2 into delta HF naught of O2. ये रिएक्शन, ये इक्वेशन सबको समझ में आया? How I have written yes or no, please tell me guys. Yes, sir. All of you understood this 6, this 3, here 1 and here 15/2. अब यहाँ पे values put करेंगे. Can somebody help me in putting in up the values? Please tell me guys. 6 into what is the enthalpy of formation of carbon dioxide? 6 into quick help कर दीजिए please. Minus 393.5. Minus 393.5. सारे के सारे किलो जूल्स में है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा. प्लस 3 into Minus 286. minus 286 minus, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा H naught F और C6H6. we have to calculate this, plus 15/2 into what is the enthalpy of formation of O2 gas? अच्छा, और ये इसको आप लिख सकते हैं -3267, है ना, बिकॉज H naught R is what 3267. कौन ये बताएगा what is the enthalpy of formation of O2 gas? What is the enthalpy of formation of O2 gas? बताइए. नहीं दिया हुआ ना information? Is that information given in the question? No, sir. नहीं दिया हुआ ना. Something is missing. Something is missing in the question. Something is missing in the question. लगता है ऐसा? ऐसे ही लगता है केमिस्ट्री में ना सर, something is missing. O2 का यही नहीं है. अरे भाई, O2 तो आपका क्या है? याद आया कुछ? Enthalpy of formation of O2 gas will be what? Enthalpy of formation of O2 gas will be what? क्या Zero. होगा? क्यों होगा 0? Because it is in the most stable state. ठीक है ना, तो O2 गैस का तो 0 होगा. ठीक है, so nothing is missing in the question. Please ध्यान रखिएगा. This will be into 0 because of the definition. And now you need to just calculate what is. Calculate कर लीजिएगा इसको. Tell me guys. 6 into इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. You'll get something. यहाँ पे भी माइनस साइन में कुछ मिलेगा आपको, यहाँ पे भी आपको माइनस साइन में कुछ मिलेगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा. माइनस यू विल हैव, इसको अगर आप इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, दिस विल बी डेल्टा H naught F of C6H6 एंड माइनस का प्लस हो जाएगा, यू विल हैव 3267, है ना, एंड यू विल गेट दी डेल्टा H naught F. चलिए प्लीज डू दिस क्वेश्चन, टेल मी ना क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को. इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे, दोनों को ऐड कर लीजिएगा एंड यू विल गेट, एंड देन यू विल हैव प्लस 3267 एंड द आंसर विल बी इन किलो जूल पर मोल. प्लीज याद रखिएगा इसको, दिस विल बी इन किलो जूल पर मोल. What's the answer? Devan, correct.
You can just share the answer on my chat. All of you done? Yes or no? Please tell me. Please send the answer, guys. See, the answer you will be getting is 48 kilojoule per mole, 48 kilojoule. Now write another question. (48.51) आ रहा है. 48.51 होगा. ठीक है फिर. Don't know the exact, but I remember it is 48 kilojoule per mole. Write the another question. Different type of question. Calculate the enthalpy of formation of ethane. From following data. The first equation is given. Carbon plus O2 gives you carbon dioxide. And the enthalpy of this reaction is given out to be minus 393.5 kilojoules per mole. Second reaction that you have been given is H2 plus half O2 gives you H2O. Enthalpy of this reaction is given out to be minus 286 kilojoule per mole. Third, you have been given C2H6 plus 7/2 O2 is giving you 2 moles of carbon dioxide plus 3 moles of H2O, and the enthalpy of this reaction is equal to minus 1560 kilojoule per mole. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए? All of these are what your given reactions. ये सारे क्या हैं आपके पास? Given reactions. Now in the solution, first of all, you will write the target reaction. Target reaction आपको कौन बताएगा? आपको बताएगा target reaction. Question में क्या दिया हुआ है? Enthalpy of formation of ethane. Ethane क्या होता है? Ethane is C2H6. C2H6 नहीं, C2H5OH. Ethane नहीं, C2H6 होता है. Ethane ethanol नहीं ना? Ethanol नहीं है ना? नहीं, ठीक है. C2H6. Now, ethane is formed by what molecules? Tell me, guys.
sorry, what elements? Ethane is formed by what elements? Hydrogen, Hydrogen and carbon. कार्बन है ना. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है इसका, राइट. हैव टू कैलकुलेट दिस डेल्टा H नॉट F. तो ये तो 1 मोल ही रहेगा, है ना. 1 मोल ऑफ ईथेन विल फॉर्म दिस बाय कार्बन सॉलिड प्लस H2 gas. And how many moles of H2? 3 moles of H2. How many moles of carbon? 2 moles of carbon. Now it is balanced chemical reaction. This is the target reaction. Now you have to arrange the given reaction such that you get target reaction. हमको क्या करना है? I have to arrange given reaction such that I get the target reaction. Now, in order to arrange, it is very easy. Don't worry about it. ठीक है ना? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए. बहुत आसानी से अरेंज किया जा सकता है. अच्छा, whenever you are arranging it ना, आप इसके थर्मोकेमिकल इक्वेशन के साथ, है ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको अरेंज करना. That means you have to also consider the enthalpy whatever is given. ठीक है, एंथैल्पी को कंसिडर करके आप लोग प्लीज इसको अरेंज कीजिएगा. कैसे अरेंज कीजिएगा हम आपको बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी in the target reaction, can you see what is the first reactant? What is the first reactant? बताइए तो जरा क्या है first reactant? अरे tell me guys, what is the first reactant? Carbon. Carbon. अब ये बताइए, in the given reaction, which equation is having carbon? कौन से इक्वेशन में कार्बन है? First and third. फर्स्ट एंड थर्ड. थर्ड में कार्बन नहीं है ना. थर्ड में तो आपके पास इथेन है. कार्बन एज एन एलिमेंट, ओनली फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. नाउ we need carbon in the reactant. We have carbon in the reactant, so you will write the reaction, you will write this equation as it is. But please see, we need 2 moles of carbon. And how many moles of carbon is in the given reaction? Tell me guys, how many moles of carbon is in the given reaction? 1. तो आप क्या कीजिएगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड देन यू विल राइट इट लाइक दिस. 2 कार्बन प्लस 2 O2 gives you 2 moles of CO2 and the delta H naught for this reaction will be equal to 2 into minus 393.5. सही है? Yes or no please tell me guys. क्लियर है क्या करना है? Yes or no please tell me guys. क्लियर है? हाँ. अब बताइए. अब उसके बाद आपने कार्बन को ले लिया. हाइड्रोजन के बारे में बताइए. Which equation should I write and what should I multiply for hydrogen? हाइड्रोजन में बताइए कौन सा इक्वेशन में है? We have H2 in which equation? 1, 2. Second equation में H2 है. And how many moles? 1. And how much do we need? 3. So I will multiply this whole equation by 3 and I will write it like this. 3 moles of H2 plus 3 by 2 moles of O2 is going to give me 3 moles of H2O, and the delta H naught R for this reaction, the enthalpy of this reaction will be 3 into minus 286 kilojule per mole. Now, what about ethane? Ethane कौन से reaction में है? First, second और third, tell me guys. Ethane कौन से reaction में है? Third. Third में है. अच्छा. We need ethane in the product or reactant. कहाँ पे ethane चाहिए? ethane कहाँ चाहिए जरा? कहाँ पे चाहिए? Product. और इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में कहाँ पे है? Reactant. तो हम लोग स्विच कर देंगे इसको. एंड सी, अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे पूरे इक्वेशन में तो पूरे इक्वेशन में 2, है ना. 3 मल्टीप्लाई करते तो पूरे इक्वेशन में 3. एंड व्हेन यू आर स्विचिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन यू विल आल्सो स्विच द साइन. ठीक है, साइन क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा. बिकॉज रिएक्टेंट इज नाउ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज नाउ रिएक्टेंट. सो विल राइट इट लाइक दिस. 1 मोल चाहिए था, यहाँ भी 1 मोल है. सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस इक्वेशन एज इट इज, जस्ट स्विचिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, सो आई हैव 2 moles of CO2 plus 3 moles of H2O giving me 1 mole of C2H6 plus 7 by 2 moles of O2. Enthalpy of this reaction क्या हो जाएगा जरा बताइएगा? What will be the enthalpy of this reaction? जी,
What will be the enthalpy of this reaction? अरे 1560. 15 positive में ना plus 1560. ठीक है, kilojoules per mole. Now you just need to add this whole thing. ठीक है, ऐड कर दीजिए आप. So you can cancel pretty much everything. Carbon dioxide and carbon dioxide will be getting cancelled. अच्छा, ये cancellation में किसी को दिक्कत है? Yes, please tell me, raise your hand. You're adding this all thing. Cancellation में किसी को दिक्कत नहीं है ना? आपके पास अगर ऐसे होता ना 2x plus 3y is equal to 4z और यहाँ पे होता 4z plus 3b is equal to 1c, तो 4z और 4z कैंसिल हो जाता है. Yes or no, please tell me if I am going to add this down. हाँ है ना? Yes, sir. है ना? तो ये भी इक्वेशन ही है. These are chemical equations, है ना? बस यहाँ पे chemicals है, यहाँ पे nothing else. Okay, so carbon dioxide will be cancelled. What else can be cancelled? Water cancel कर सकते हैं? हाँ है ना? Water cancel हो गया? Yes, sir. 3 by 2 plus 2 is equal to how much? 2 2s are 4, 4 plus 3 7, 7 by 2. So this complete oxygen is 7 by 2 and this 7 by 2 oxygen cancelled. सही है? Yes or no, please tell me, guys. And what I will get? 2 moles of carbon plus 3 moles of hydrogen is giving you 1 mole of C2H6. और इन सब को जब आप सम करेंगे तो इसमें आपके पास क्या आएगा? डेल्टा H नॉट R आएगा, which will be equal to what? ये रिएक्शन क्या है? This reaction is nothing but the delta H naught of formation. It is the enthalpy of formation of ethane. अब इसको आप सम कर दीजिए. 2 into minus 393.5 plus 3 into minus 286 plus 1560 kilojoule per mole. Please write this down and then tell me कितना है. किसी ने कैलकुलेट कर लिया? देवांगी क्या सही है? नो. मोहम्मद तारीफ, आंसर इज रॉन्ग. नेगेटिव में आएगा आंसर ना. देखिए, दिस इज ऑलमोस्ट 400. ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर हम आपको बता देते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट 400, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 800. दिस इज ऑलमोस्ट क्या ले लें इसको? 250 कर लेते हैं इसको. सो दिस विल बी 250 कर लें. 93 में से हमें नहीं 250 नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी लाइक 280 कर लेते हैं. 290 300 अगर कर लेते तो विल बी व्हाट? माइनस
900 नेगेटिव में आएगा तारीफ, आंसर विल बी नेगेटिव. आई थिंक यू फॉरगॉट दिस नेगेटिव साइंस. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना कैसे करना है? देवांगी, फहद, हिबा, जानिया, तारीफ, टेल मी गाइस. Yes, sir. Understood. ठीक है. सर अगर वो जो O2 and H2 है कैंसिल नहीं हो रहे होते तो क्या? नहीं कैंसिल होंगे ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन उसी तरह से देंगे. हाँ. है ना? या तो देखिए लाइक या तो ऐसा होगा कि आपके पास आपने ये जो मल्टीप्लाई किया ना हमने 2 3, ठीक है, वो अगर आप सही से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब आपके पास वैसा कुछ आएगा. ठीक है, मतलब आपको तो आंसर निकालने के लिए जवाब मतलब सवाल दिया जा रहा है ना. सो दे विल गिव यू क्वेश्चंस लाइक दैट जहां पे आपके पास सारी चीजें कैंसिल हो जाए एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड एंथैल्पी. जो भी रिएक्शन है आपको वो रिक्वायर्ड एंथैल्पी के अनुसार आ जाएगा. कोई सवाल मिले आपको? अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो फिर बताइएगा. कैंसिल नहीं होने का नहीं आएगा आपको. एक एक चीज जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये होगा कि कार्बन आपके पास मतलब फर्स्ट रिएक्शन में भी होगा, सेकंड रिएक्शन में भी होगा, इस तरह के आपको चीजें मिल सकती है. तो दैट डिपेंड्स वो सवाल कौन सा है एंड अकॉर्डिंगली यू विल आंसर इट. बट वो धीरे धीरे आएगा ना, अभी तो एक ही सवाल किया है, यू विल सी सिमिलर क्वेश्चंस मेनी टाइम्स. इसी को जो है ना क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं देयर इज अ लॉ फॉर दिस इज नोन एज, कौन सा लॉ है किसी को पता है? यू नो हेसेस लॉ. हैव यू हर्ड दिस लॉ, हेसेस लॉ? हेस लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. देखिए इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम लोग इस तरह से अज्यूम करके चलते हैं कि हमने लिया कार्बन एंड O2, इससे मिला हमको 2 कार्बन डाइऑक्साइड. हमने लिया 3H2 एंड 3/2 O2 और हमें मिला 3H2O. इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिला? वी गॉट ईथेन एंड 7/2 O2. ठीक है, आपके पास इस तरह से भी ईथेन आ सकता है. और ईथेन कैसे आ सकता है? ईथेन कैन आल्सो कम फ्रॉम लाइक दिस, 2 कार्बन प्लस 3H2 इज गोइंग टू गिव यू ईथेन. चाहे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ईथेन का इस डायरेक्शन से लेके आए, चाहे आप इस डायरेक्शन से लेके आए, इट इज गोइंग टू बी द सेम. दोनों में क्या होना है आपको? दोनों में आपको सेम ही आंसर. ओके, दैट इज नोन एज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. प्लीज राइट. बाय द वे इसका आंसर -85 ना, कितना आया था? यस, -85 किलोजूल पर मोल. ओके, प्लीज राइट. Hess's law of constant heat summation. Please write. If a reaction happens in several steps, then the delta H naught R is the sum of delta H naught R of the intermediate steps. Another statement for the same law is